गुड इवनिंग पिला माने तो आपण माने जानिथिबे कि आपण मानकर एथिक्स रो मेंटर हम गाइडेंस प्रोवाइड करे एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स रो तो वेलकम टू वेदांग सिविल सर्विस पावर्ड बाय वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो आज आम गोटे शॉर्ट वीडियो आनिबा जोटे कि आपण मानकर जो भी आपण सिलेबस अछि आपण एथिक्स रो ताको धीरे धीरे शॉर्ट वीडियोस थ्रो रे आपण मानकु जेमति आपण मानकर पाखे पहुंचे परिबी सो दैट कि आगु को आसुतिबा जो मेंस एग्जाम आपण मानकर हबा को जाउची सेतरे ए गुड सब्जेक्ट गुडी को बा ए टॉपिक गुडी को आपण को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहबो ठीक अछि। तो आज हम स्टार्ट करबा एथिक्स रे आपण माने जानिथिबे एटीट्यूड वाला जो चैप्टर अछि वैल्यूज वाला जो चैप्टर अछि दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो आज हम जानिबा कि एटीट्यूड वर्सेस वैल्यू एटीट्यूड कोन वैल्यूज कोन केमती गोटे ह्यूमन बीइंग रो वैल्यू फॉर्मेशन वे केमती गोटे ह्यूमन बीइंग रो एटीट्यूड फॉर्मेशन वे दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट ओके। तो फास्ट देखिबा कोन ना एटीट्यूड कोन ना एटीट्यूड्स कैन बी डिफाइंड as enduring evaluation or judgments individual hold towards people, objects, events or ideas. They represent a person's overall evaluation of something and can range from positive to negative, influencing subsequent thought, emotions and behavior. ओके जदि आम ले मेनली आपण मानको बुझिया को चाहिबी ताले मु आपण मानको ए कहे पई चाहूची एटीट्यूड गोटे एमती जिंस जोटा कि आपनकर डिसफेवर हेतिबो आइदर आपण फेवर करथबे आइदर आपण डिसफेवर करथबे ईदर यू आर लाइकिंग और यू आर डिसलाइकिंग बेसिकली यू लाइक समथिंग यू लाइक कि पर्टिकुलर a person you like particular an event or you like something in the organization that is your attitude ओके जदि आपण को लाइक करू नाहंती दैट इज योर नेगेटिव एटीट्यूड जेते बेले आपण लाइक करूचंती दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जदि हमें देखिबा कि फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड फास्ट माने आपण भावंतु जे कोनोसी भी आपण काम करूचंती सपोज आपण हैबिट फॉर्मेशन एवरी डे आई वोक अप at the early morning 5 am I woke up that is my habit the habit will converted into belief माने कि मु बिलीव करिबी when I am waking up early in the morning my productivity has increased a lot काहे कि जो माने मॉर्निंग रे जब आपण उठिबा स्टार्ट करिवे तो डे टा आपण को लंगर सीम्स हबो आपण माने रात रे जल्दी भी सोइबे तो आपण हेल्थ बेनिफिट भी अछि आपण प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हबो कोन हले ना आपण माने कन्विंस हेले कि आपणकर कि प्रोडक्टिविटी आपणकर जहाँ भी अच्छी तो प्रोडक्टिविटी आपण मानकर कौन होची ना प्रोडक्टिविटी आपण मानकर इंक्रीज हैला आ आपणकर जो स्लीप पैटर्न अच्छी जहाँ भी आपणकर स्लीप पैटर्न अच्छी सेटा आपणकर बेटर हे परबो बुझ पाले कि नहीं। तो आपणकर हेल्थ बेनिफिट भी सेठी आपनको मिलिला हेल्थ बेनिफिट ता सहित आपण देखंतु जते बेले आपण गोटे जिंस हैबिट हैला हैबिट पर आपणकर बिलीफ हबो बिलीफ रो आपण मानकर कोन हबो ना वैल्यू हबो बिलीफ रो गोटे जिंस आपणकर कोन हबो वैल्यू हबो कि आपणकर जो मॉर्निंग रो जो उठिबार जो अभ्यास अछि जेटा आपण बिलीव करले कि दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ along with that your productivity has been increased that means it will start now it will become a value system now it became your value कि waking at the early morning is good for you and it became your value तर value रो आपण मानकर स्टार्ट कोन हबो ना value रो आपनकर फॉर्मेशन ऑफ virtue and from there to your formation of the attitude towards the people who wake up early in the morning or attitude towards for the organization attitude towards an event everything which encourage waking people at the early morning तो attitude तांका प्रति आपनकर केमती रहइबो ना पॉजिटिव एटीट्यूड आपण मानकर फॉर्मेशन हबो। तो फास्ट आपण माने हैबिट जिबे हैबिट रो आपण बिलीव हबो बिलीव रो आपनकर वर्च्यू हबो वर्च्यू रो सॉरी बिलीव रो आपनकर वर्च्यू हबो वर्च्यू रो आपण मानकर कोन हबो ना वर्च्यू रो आपण मानकर एटीट्यूड हबो बुझ पाइले। तो जे कोनोसी भी जिंस आपण माने करंतु एई बोली भाबरे आपनकर एटीट्यूड कोन हबो ना फॉर्मेशन हबो। तापर हमें देखिबा कि आपनकर एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड कोन अछि माने आपन जो एटीट्यूड फॉर्मेशन हैला तो एटीट्यूड जो फॉर्मेशन माने वेदर यू लाइक समथिंग और यू डोंट लाइक समथिंग that is your attitude may be different from your behavior attitude may be different how you behave suppose I have a very bad attitude for something but in my behavior just because I am behaving good with that particular person that doesn't mean that I have a positive attitude toward that person maybe I have negative attitude for that person maybe I have negative attitude toward that organization or an event suppose for example जदि मैं आपण को कहबी वेडिंग अछि ओके वेडिंग अछि आ वेडिंग पई का मोर पर्टिकुलरली माय ओपिनियन कोन ना माय ओपिनियन इज वेडिंग इज मोर ओडे एटीट्यूड कोन अछि एति पई ना एटीट्यूड ओडे अछि आपण कहि नेगेटिव एटीट्यूड अछि दैट मींस कि मु भाबुची कि वेडिंग इज लाइक फॉर मी is a very sacrosanct thing and it is the wedding between two people
two individuals who have agreed open to share their life together, or they have agreed open to go or to cross this life together and to companion among each other. That is what wedding should be. But wedding रे जो आपण मानकर जो भी आपनकर जो डांस हे गला बाकी जो जिंस हे गला तो मते लागो छेडा होची वेस्ट ऑफ मनी. So my attitude for wedding is negative. But when my brother's wedding, at my brother's wedding, you might find me, I am dancing with more and more excitement. Maybe I'm enjoying the food, I'm enjoying the other things as well. Maybe I'm faking that behavior. Maybe in my core I don't like the wedding thing, I don't like the wedding ceremony, but at the moment, because my brother might feel bad about my behavior, that is why I'm adjusting myself, I'm showing that behavior that is contracts to my attitude. जोटा कि मोर attitude सहित कौन ना जोटा complementary होनी, attitude मोर अलगा अच्छी बट मोर behavior होची change हो जाइची. बाकी जो मानकर wedding प्रति जो मान भावुथुवे कि नाही जण जनकर positive attitude भी सेति पई थिबो. Positive attitude कोन पई कि वेडिंग रे कोन होची ना वेडिंग रे समस्ते आसिकी वेडिंग रे कोन होची ना टुगेदरनेस होची. टुगेदरनेस हैला तो जो फंक्शन हैला कि आमे जो आपनकर जो कायोस वाला लाइफ अछि, जो माने समझ स्ट्रेस रचंती, पीपल आर वर्किंग 5 to 9 8 hours 9 hours, सो सेमानन को गोटे एन्जॉयमेंट मिलुची, फैमिली टाइम आपण माने एन्जॉय करि पारचंती. तो ताको वैल्यू सिस्टम फैमिली टाइम आपण माने एन्जॉय करि पारचंती हैला. तो जत्ते बेले वैल्यू कथा हमें कहउचंती ना, वैल्यू इज समथिंग that will regulate a human being, that is a part of your personality. Value is a part of your personality that is going to regulate, that is going to motivate, that is going to catalyze your behavior in a particular situation. That is your value system. Okay, तो suppose maybe जनकर value भी आपण मानकर कोन hierarchical भी हे पारे, कोटा को आपण अधिका value देबे, कोटा को आपण कम value देबे. Suppose somebody who is having value for the family time, ताको जो family सहित time spend करिवा is his her priority. That means से wedding रे कोन अब योगदान दबो, तर attitude भी कोन अब positive towards the wedding. मो कथा बुझी परछ कि नै, ता माने कोन ना attitude को formation ले value रे भी रोल अछि. आ जदि आपन attitude को जिंस पई भलो थिबो सेति बेले आपन value भी ता पई ऑटोमेटिकली आपन को भलो फील हो. पर value फास्ट आपन किंतु फॉर्मेशन हो. जो जिंस पई आपन value भलो अछि से जिंस पई का आपन attitude भी भलो हो. सपोज आपन बहुत ज्यादा honest अछंती, ता माने कोन आपन को जो कोर वाला वैल्यू अछि दैट इज ऑनेस्ट. यू आर बीइंग ऑनेस्ट. ऑनेस्टी आपन को वैल्यू. दैट मीन जो माने सत्य कथा कहउथिबे, जो ऑर्गेनाइजेशन आपन ट्रांसपेरेंसी बेटर थिबो, जो ऑर्गेनाइजेशन आपन मानन को ट्रांसपेरेंट वे रे सब जिंस आपन को प्रोवाइड करथबो, जो भी कंपनी होथबो, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट विल बी टिल्टेड, योर एटीट्यूड टुवर्ड देम विल बी पॉजिटिव. वही जिंस आपन मानन को कहया पई चाहूची. तापर आपन मान देखिबे कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड, जेमति ए माने हला इफेक्टिव, बिहेवियरल, आ गुड आपन सी हला cognitive. Cognitive माने knowledge जिंस, cognitive और mental ability. Cognitive knowledge कोन अछि, thought बा belief. Affection माने emotional, behavior माने what you behave, how you behave. जेमति कि मु आपन मानको कहबे, suppose I like the scenery, scenic view or the beauty that lies in the mountains, the beauty lies in the forest areas. I love that, I like that. That is my emotion toward that beauty lies in the mountains हे गला कि forest हे गला. That is my affection toward the beauty. तो मोर cognitive रे मोर कोन अछि ना कि जो forest अछि ना, that is helping us कि आपन को जो कार्बन डाइऑक्साइड हमरो एनवायरनमेंट रे बहुत ज्यादा होची, माने पोल्यूशन पई जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होची, ताको कोन करची ना जो हमरो जो फॉरेस्ट अछि ताको हम कोन कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेशन कर पारुची हैला. तो फॉरेस्ट इज गुड फॉर एनवायरनमेंट. तो कॉग्निटिव, दैट नॉलेज, दैट बिलीफ आई हैव, अगेन आई हैव दैट इफेक्टिव कि मु लाइक करे, मु पसंद करे नेचर को, मु पसंद कर द ब्यूटी ऑफ द नेचर. आई लाइक माउंटेन्स, आई लाइक रिवर्स, आई लाइक फॉरेस्ट. दैट मीन्स मोर बिहेवियर कोन हबो, आई माइट एंड अप स्पेंडिंग more money on going to such areas, or I might end up planting more plants. I might end up doing afforestation programs कि मु को भी एनजीओ रे पार्ट हेबी जोठी कि मु एफोरेस्टेशन करि पारथबी. तो बिहेवियर ले सेटा सोच हबो. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड्स. बुझ पाइले.
तापर देखिए फंक्शन कौन अच्छी ना यूटिलिटेरियन फंक्शन जोठी कि आपण मानकर जदी एटीट्यूड आपनकर पॉजिटिव थिबो तो समस्तंकर बेनिफिट पई जो फंक्शन हुए ताको हमें कोन कोंती यूटिलिटेरियन फंक्शन नॉलेज फंक्शन जेते बेले आपण पाखरे नॉलेज फंक्शन माने आपनकर एटीट्यूड अछि माने सपोज आपण पर नॉलेज अछि कोनोसी गोटे कंपनी पछि बा ए कंपनी रा क्वालिटी वाला जिंस के प्रोवाइड करछि तो जेते आपण शॉपिंग करिवे कि को जिंस आपण किनिबे तो डायरेक्टली यू हैव द नॉलेज कि दिस कंपनी इज गोइंग टू प्रोवाइड मी बेटर बेनिफिट्स और बेटर क्वालिटी दैट इज व्हाई तो डायरेक्टली आपण से जगह ही शॉपिंग करि परिबे सोशल आइडेंटिटी फंक्शन बेले बेले कौन हुए कि आमको जो जिनस आमर एटीट्यूड फॉर्मेशन एमिति हुए सो दैट कि वी विल बी सोशली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल लाइक हाउ आई टेल यू सपोज दिवाली अच्छी दिवाली रे आपण माने दीप लगाउछंती हैला कोन पई ना दिस इज एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी सेटा शो करबा कि यू आर आल्सो पार्ट ऑफ ए सोसाइटी यू आर आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए सोसाइटी बिकॉज यू आर आल्सो लाइटिंग दियाज ड्यूरिंग दिवालीज तापर सेल्फ एक्सप्रेशन जो जिनस प्रति आपनकर एटीट्यूड पॉजिटिव थिबो सपोज आपन जस्टिस भल लागे आपन इक्वालिटी भल लागे तापले आपन कोन करिवे ना द कम्युनिटीज वर सफरिंग बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी ट्रांसजेंडर हे गला एलजीबीटीक्यू जो बले कम्युनिटी छन से मानक पई ओमेन जोठी आपन मान देखछन डिस्क्रिमिनेशन होची से जगह आपन माने कोन करिवे सेल्फ एक्सप्रेशन रखिबे ता माने आपन ओपिनियन को आपन सेठी प्रकाश करिवे बुझ पाइले तापर हम देखिबा वैल्यू कोन ऑलरेडी म आपन कहली हैबिट हबो हैबिट रो आपन बिलीफ हबो बिलीफ रो आपन वैल्यू हबो वैल्यू रो वर्च्यू हबो एंड वर्च्यू रो आपन मान कोन हबो एटीट्यूड फॉर्मेशन हबो जदि हमें देखिबा कि वैल्यूज कोन ना वैल्यू इज द डीपली हेल्ड stable belief about what is fundamentally important, desirable or right. It acts as an internal moral compass that guides how you judge the world and your own actions. बुझिए इमेजिन करो कि वैल्यूज आर द डीएनए ऑफ योर पर्सनालिटीज डीएनए ऑफ योर पर्सनालिटीज दैट मीन्स वैल्यूज आर दोज डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स which promote catalyst and motivates him in a particularly way to behave in a particularly way in a particular situation. हमें कौन देखिबा ना वैल्यू कौन ना वैल्यू होची गोटे आपनकर dimensions of your personalities which regulate, motivate or catalyst you to particularly behave in a particular situation. ओके जो भी आपनकर पर्सनालिटीज अच्छी जो भी आपण मानकर पर्सनालिटीज अच्छी तार गोटे कौन तार गोटे डायमेंशंस तापर आपनकर कथा आसीबे कि पर्सनालिटी माने कौन पर्सनालिटी माने मिक्स ऑफ वर्च्यू वैल्यूज माने वर्च्यूज प्लस आपनकर वाइब्स जहाँ भी आपनकर पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ भी अच्छी ताको आपनको मिसी की कौन हबो वाइसेस सॉरी VICES वाइसेस आउ वर्च्यूज ताको आपनको मिसी की कौन हबो ना ताको आपन मिसी की आपनकर कौन हबो ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट हबो बुझ पाइले कि नहीं तापर देखिए कि की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू कौन हबो ना एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल लाइक ए स्पेसिफिक रूल डोंट स्टील ए वैल्यू इज ब्रॉड कांसेप्ट ऑनेस्टी जोडा कि आपण माने कहउछन गोटे ब्रॉड कांसेप्ट इट अप्लाइज अक्रॉस मेनी डिफरेंट सिचुएशन बुझ पाइले कि नहीं तो जदी आपण देखिबे एब्स्ट्रैक्ट की जनरल तो माने कौन ना बेले बेले कौन होची ना ऑनेस्टी हमको डिफरेंट सिचुएशन ले हमें यूज करछन जते बेले हमें देखुछन कि वैल्यू आपनकर सिस्टम अछि कि ऑनेस्ट हबो ऑनेस्ट माने बीइंग ट्रूथफुल बट व्हेन यू आर हैविंग दैट वैल्यू एंड इफ यू work according to your value or being honest and that will cost you a life that time you might not be give importance to your value being honest okay तापर permanent values are formed early in the life through family culture education आपनकर फैमिली रे जब भी आपनकर वैल्यू सिस्टम थी जदि आपण मान देखिले कि योर पेरेंट्स आर रेस्पेक्टिंग योर एल्डर्स दैट मीन्स योर रेस्पेक्ट फॉर योर एल्डर ऑटोमेटिकली आपनकर से जो वैल्यू टा अछि रेस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स आपण मान भितर कोन इंक्रीज हबा को लागिवो फॉर्मेशन हबा को लागिवो जदि आपण मान देखिबे कि आपण जो पेरेंट्स अछंती जदि आपनकर फादर अछंती कि ग्रैंडफादर अछंती दे आर रेस्पेक्टिंग योर मदर एंड योर ग्रैंडमदर ता माने कोन आपनकर स्पाउस पति आपनकर फीमेल पति इन जनरल आपनकर वैल्यू सिस्टम डेवलप हबो तो डेवलप हबो जोटा कि
आपनकर कोन ना रेस्पेक्टिंग वुमेन तापर आसला कोन वंस एस्टेब्लिश दे रेयरली चेंज अनलेस यू एक्सपीरियंस ए मेजर लाइफ इवेंट अनलेस कि आपण मानकर सपोज आपनकर ଗୋଟେ वैल्यू सिस्टम अछि यू रेस्पेक्ट वुमेन बट जदी आपनकर लाइफ रे किछ ଗୋଟେ मेजर इवेंट नो आसला तो आपण यू विल कंटिन्यू टू डू सो you will continue to show the respect to every woman you you come across that means colleagues man hele work re gala professional he gala public life re gala schoolmate he gale classmate ho gale everywhere you are having that value to respecting the woman but the moment you feel some experience like you faced somebody some woman you are being kind hearted or being respectful that woman wrongly accused of something you have never done or never thought of or something they have done fraud that means after that when you face that much major experience in your life you started your value system will change for women and you might not feel the same you used to feel for women तापर आसला कोन हायरार्किकल हेते कि जो मानकर वैल्यू सिस्टम थाए को वैल्यू को अपन बेसी ऑनेस्टी दोचंती माने सॉरी बेसी अपन को वैल्यू को इंपोर्टेंस दोचंती जन जन फैमिली वैल्यू को बहुत इंपोर्टेंस दियंती रेदर देन कि आपनकर जो अलगा जो कैपिटलिज्म भी अपन को गोटे वैल्यू इज वेल्थ को एक्युमुलेट करबा दे डोंट लाइक कि एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ दे लाइक प्रमोटिंग मोर एंड मोर माने टाइम कि अपन माने प्रमोट करंती कने वैल्यू सिस्टम की फैमिली रो जो वैल्यू सिस्टम को से माने प्रमोट करंती से माने चाहंती कि जेते अधिक टाइम हेई परबो मो फैमिली सहित स्पेंड करी रेदर देन कि मो वेल्थ पछरे जीबी बुझिपाछ कि नहीं तो हायरार्किकल हेते है कि आपण मन पर डिपेंड करे कि कोटा को आपण अधिक वैल्यू दोचंती कोटा को आपण कम वैल्यू दोचंती हैला तो एवरी we don't hold all values equally everyone has value system where some principle like family might sit higher than other like wealth maybe I like wealth but someone in my place they like family ओके जेमती कि मोर वैल्यू सपोज कि जो गोटे आमे बे देखुचंती कि वुमेन्स वर अनमैरिड दे आर वर्किंग दे लाइक देयर वैल्यू सिस्टम इज इंडिपेंडेंस दे वांट मोर इंडिपेंडेंस इन देयर लाइफ बट वर मैरिड हैविंग फैमिली दे वैल्यू फैमिलीज दे वैल्यू पर्सनल रिलेशन ओवर कि आपनकर पर्सनल रिलेशन भलो हो फैमिली फॉर्मेशन हो रेदर देन कि मो इंडिपेंडेंस है तो वैल्यू डिफर करे बुझ पाछ कि नहीं तापर असला मोटिवेशनल हेते वैल्यूज आर द व्हाई बिहाइंड योर गोल्स you have value independence you will be motivated to start your own business or move out on your own जते बेले आपण मानकर वैल्यू सिस्टम करचन कि मु इंडिपेंडेंस हेबी मु गोटे जॉब सेक्टर आसीबी मु भलो गोटे ओएस ऑफिसर हेबी कि आईएएस ऑफिसर हेबी दैट मींस कोन मु मोटिवेट करबो हाउ दैट वैल्यू इज गोइंग टू मोटिवेट तो व्हाई वाले आपण को क्वेश्चन पचरबो व्हाई यू वांट टू बिकम एन ओएस ऑफिसर why you want to become an IAS officer तो value अपन को motivate करिवो so that कि sincerely you will give exclusively 8 to 10 hours for a study and you study more and you will qualify and you will get success तो value अपन मन को कौन करिवो ना motivate करिवो तो आपण मन को देखो जो गोटे इजिली गोटे डायग्राम अछि जहा थोरे भी आपण माने एई भली टाइप रो डायग्राम भी आपण माने एग्जाम रे रिप्रेजेंट करके आसी परिबे काहे कि ना 3 आवर्स भीतर आपन को जो भी क्वेश्चन थाए सब जिंस अटेंड करबे इज नॉट इजी टास्क तो सेति में आपण माने कोन करबे एठी म आपन को ऑलरेडी कहि देछि बिलीफ हबो एक्सपीरियंस वैल्यू हे गला त नॉलेज आसिला प्रिंसिपल व्हाई कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स मोरल लॉज आसिला बिहेवियर भी सेटा हबो हाउ व्हाट भी आपन को बिहेवियर आसीबो कॉन्सिक्वेंस हे कि आपन को वैल्यू सिस्टम स्टार्ट हबो तापर सेटा प्रिंसिपल ले आपन को कन्वर्ट करबो एटा भी देखि दंतु कि आपन को बिलीव हैला तापर आपन खाली कहि दोछि हैबिट तो हैबिट आपन को हबो बिलीव बिलीव रे आपन को वैल्यू वैल्यू रे आपन को एटीट्यूड आपन को फॉर्मेशन हबो तो कोर रे कोन अछि बिलीव तापर कोन अछि वैल्यूज तापर आपन को कोन अछि ना एटीट्यूड अछि तापर देखंतु जते बेले ए जो चित्र रे अछि ए जिन हम बहुत जिन से जानि परबा जेमति कि आपन को वैल्यूज अछि वैल्यू जदी सोसाइटी हे गला ताले एटा एथिक्स हे जिवो जदी इंडिविजुअल हे गला ताले एटा मोरल हे जिवो बुझ पाइले माने देखो जते बेले एथिक्स माने कोन एथिक्स माने कि आपन मानकर जो सोसाइटी कौन वैल्यूज को आपन को रेगुलेट करूछ हाउ द सोसाइटी इज गोइंग टू रेगुलेट द मोरल प्रिंसिपल सोसाइटी सेट करूछ नॉट टू स्टील give respect to women these are the specific to society it will vary from society to society जेमति कि हमर एठी जेमति हमें कहउचंती कि पेरेंट्स मान को सहित रहबा that is a value हम सोसाइटी acceptable that is ethics we cannot abandon our parents after getting certain age we cannot abandon our parents that is our value system likewise that individualism also a value in the western culture western country manakare individualism रोचंती तांको मानकर कोन individualism दरकार privacy is a value they cannot live there with their parents that is their value तो society रे
जो भी आपनकर मोरल प्रिंसिपल्स अछि ताको जे रेगुलेट करे को ह्यूमन एक्शन वेदर इट इज गुड और बैड दैट इज आपनकर कोन हबो ना एथिक्स हबो और एथिक्स रो आपनकर हबो नॉर्म्स मोरल हबो मोरल आपनकर कोन बनिबो ना कैरेक्टर बुझ पेले पर्सनल हे गेला तो वैल्यूज हे गेला जते ऑब्जेक्टिफाइड हे जिवो सेटा आपनकर कोन हे जिवो एटीट्यूड ऑब्जेक्टिफाइड हे गेला सेटा कोन हे जिवो एटीट्यूड योर वैल्यू फॉर जस्टिस ऑब्जेक्टिफाइड माने यू लाइक जस्टिस वैल्यू आपनकर कोर सिस्टम वैल्यूज रे कोन अछि ना जस्टिस बट एटीट्यूड कोन हबो ना जोठी भी आपन देखुचंती कि फॉर योर देखुचंती कि जोडी ओमेन को डिस्क्रिमिनेशन करा होची बाइस्ड करा होची से जगह आपण माने से जिंस को आपण विरोध करछन एटीट्यूड आपण करा शो करची आपण LGBTQ+ जो कम्युनिटी अछि से मानु को सपोर्ट करछन ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करछन दैट इज योर एटीट्यूड वैल्यूज ता आपण करा ऑब्जेक्टिफाइड हे गला बुझ पाले कि नहीं कॉमन एग्जांपल्स हम देखि देबा हेल्थ और फिटनेस वाले वैल्यू सर्कल कर ना हेल्थ लॉन्गेटिविटी आ वेलबीइंग एटीट्यूड कोन एंजॉयिंग रनिंग हेल्थ आपण करा वैल्यू बट व्हाट यू लाइक यू हाउ यू विल गेट ए प्रॉपर हेल्थ बाय enjoying running like healthy food disliking gym जदि आपण डिसलाइक करबे जिम को माने कोन आपनकर हेल्थ खराब हे जिवो बुझ पाले कि नहीं तो एटीट्यूड बेसिकली आपनकर लाइक और डिसलाइक ऊपर डिपेंड करे ओवरलैप कोन होची ना समवन हु वैल्यूज हेल्थ एंड हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रनिंग एंथुसियास्टिक रनर बुझ पाइलो से कोन बा एंथुसियास्टिक रनर हे जिवो माने तर वैल्यू सिस्टम की हेल्थ और तर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रनिंग वैल्यू ओनली कोटा ना someone values health but dislike running might prefer yoga से लाइक को पसंद रनिंग को पसंद करेनी बट से कौन करे ना ताको योगा पसंद करे तमे से योगा करे बट तार मोर कांसेप्ट कौन कि मोर वैल्यू सिस्टम होची कि हेल्थ मु हेल्थ को प्रेफरेंस देबी बट नॉट थ्रू द रनिंग दैट मींस आई हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रनिंग बट आई प्रेफर योगा बिकॉज़ माय वैल्यू इज हेल्थ I like to protect my health. I like to live for a long period or well-being को preference दिए. That is why I like yoga, but I don't like running. That is your attitude. Attitude only माने कौन ना someone who enjoy running for fun but doesn't value health. A casual jogger. जदि आपण माने को रनिंग करे केमती कैजुअली आपण को पसंद ठीक अछि भाई हम सकाळ उठ के सब दिन जाई मो रनिंग करछि बट यू हैव नथिंग टू डू विथ हेल्थ आपण से जिंस केबे माइंड को भी आनी नांती आपण बिलीफ सिस्टम में नाही दैट इज योर ए कैजुअल जॉगर जदि हमें कहबा माने कोन आपण एटीट्यूड टुवर्ड्स रनिंग इज पॉजिटिव बट यू डू नॉट हैव सर्टेन वैल्यू टुवर्ड्स योर हेल्थ तापर अपन देखिबा एनवायरमेंटलिस्ट भी देखि दबा ना वैल्यू सर्कल का ना प्रोटेक्टिंग नेचर सस्टेनेबिलिटी रिसोर्स कंजर्वेशन सस्टेनेबिलिटी माने द वे we should use the resources that is present in nature or man-made which the resources means something we satisfy the human needs so it can be natural or human made so the way we should use the resource that in a such a way that the resource we can use potentially along with that that can be used further after our next generation can be used that एमिति भाबरे हम ताको रिसोर्स को यूज करबा आमे भी यूज कर परतबा आ हम नेक्स्ट जनरेशन भी ताको यूज करला बडबा सेती मात्रा थिबो हैला तो जो भी नेचर जो रिसोर्स अछि नेचर माने नेचर जो अर्थ अछि तो अर्थ रे से नेचर कोन हो रिप्लेनिश करि परिबो बट इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर दैट इज व्हाई सस्टेनेबिलिटी इज रिक्वायर्ड दैट इज व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड को माने जो नेचर रे रिसोर्स खत्म हे जिवो तो बहुत टाइम लागिवो तो नेक्स्ट जनरेशन पई का प्रॉब्लम क्रिएट हो सेती हम चाहउछन कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो एटीट्यूड कौन ना लाइकिंग रिसाइक्लिंग आपन को पसंद अप्रिशिएटिंग पार्क और डिसलाइकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुझ पाले माने आपन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद अरे बहुत केंचा मेंचा लोग डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन विल बी देयर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर देयर यू माइट नॉट फील मोर कंफर्टेबल यू फील कंफर्टेबल विथ योर ओन कार बुझ पाइलो तो बट यदि आपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पसंद करिबे ने तले एनवायरनमेंट पाइन का सेटा कोन प्रॉब्लम करिबो बट दिस इज योर एटीट्यूड लाइकिंग और डिसलाइकिंग overlap con a person who values sustainability and has a positive attitude towards recycling often also use public transport जदि आपण वैल्यू करछन कि सस्टेनेबिलिटी हबा दरकार जदि आपण चाहउछन कि द मोर we will use personal vehicles it will create more and more pollution to the environment or air pollution will increase that is why what you will do na your positive attitude recycling भी अछि आ आपन को पसंद भी लगे कि ठीक अछि भाई गोटे बस जीवो सेते 100 जण जीवो तो मु सेथरे ही पळेबी तो I will reduce the environmental damage that is going to happen through my personal vehicle okay तापर आपन को वर्क एथिक्स रे कोन हिच परबो ना सा वैल्यू सर्कल कोन अचीवमेंट इंटीग्रेट एंड टीम वर्क अचीवमेंट माने आपन कोन कोन अचीव करचंदी इंटीग्रेट मीन समथिंग
जो बेले वैल्यू सिस्टम जो फाउंडेशनल वैल्यूज आपण मानकर जो पढ़ा जीव कि जो सिलेबस रे इट वाज रिटन तो फाउंडेशन वैल्यूज रे जो सिविल सर्विस पे जो वैल्यू अच्छी सब हाईएस्ट वैल्यू आम इंटीग्रिटी की कहते वाई बिकॉज इंटीग्रिटी इज वन ऑफ द वैल्यू वेयर you are not correct, you are not corrupt, or you are not doing any wrong when nobody is watching you. Suppose you are being honest or you are being truthful, that means you are being honest. But जते बेले आपण माने कोनोसी भी एमती काम करूनांती कि जते बेले आपन को केही भी देखु ना सपोज आपण माने कहबे कि गोटे ऑफिसर अछंती दैट पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट, दैट पर्सन इज नॉट करप्ट बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट टेकिंग ब्राइब डायरेक्टली, बट he might be using official paper for his own work, he might be using official vehicle for his own work. That means that person is not integrity, that person has lacking integrity, the person integrity ही नहीं. Why? Because जो माने पाखर integrity थिबो तादि के देखो भी नथिबे फिर भी से कोन करथबो ना से को से कंटिन्यू करथबो. जेंति आपण देखिथिबे टोल गेट रे जदि आपण ऑफिशियल वर्क पई जाउचंती तो जो ऑफिसर मान अछंती डीएम हे गेले एसडीएम हे गेले तांको जेते पैसा लागबन, बट आपण जते पर्सनल वर्क पई जाउचंती still you are not paying toll gate price. That means you are not an integrity person. Do you understand my point? Integrity माने being truthful, honest रा super वाला जो डिग्री आसी जिवो सेटा होची आपनकर integrity. You are being honest, being truthful. Do you follow your duty whether someone is watching or someone is not watching. बुझ पाइला? तो टीम वर्क भी हबा दरकार. टीम वर्क आपन को वर्क जदि आपन माने चाहुचंदी वर्क जो एथिक्स अछि, वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन अछि सेटी डेवलपमेंट हो, सेटी बेटर वाला सब जिंस हो, सेटी आपन टीम वर्क भी करे पे पड़ेबो. एटीट्यूड सर्कल कौन ना एंजॉयिंग कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, वैल्यूइंग पंक्चुअलिटी, डिसलाइकिंग ओवर टाइम. बुझ पाइलो? तो आपन घर वैल्यू कि मु ओवर टाइम करे को मते पसंद नाही, वैल्यू करंती आपन का पंक्चुअलिटी कि ऑन टाइम रे मु जाय कि ऑफिस रे पहुंचीबी, मो काम सारीबी, तापर मु आसीबी. आई डोंट लाइक ओवर टाइम. कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जहां भी अछि काइना टीम वर्क आपन को पसंद माने कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट आपन को पसंद होबा दरकार. तापर ओवरलैप कोन ना someone who values achievement and enjoy collaborative project demonstrating a positive attitude towards team based success. बुझ पाइलो? तो से माने कोन करिवे ना से माने डेमोन्स्ट्रेट करिवे कि आपनकर टीम वर्क बेस्ड सक्सेस को करिया पय. बुझ पाइलो? वैल्यूज आर फाउंडेशनल जेटा हम देखिबा कि कोन ता भीतर अछि. वैल्यूज ऑफ एटीट्यूड भीतर हम देखिबा कोन डिफरेंस ना. वैल्यूज आर फाउंडेशनल, दे आर डीप सीटेड प्रिंसिपल. एग्जांपल कोन हला ऑनेस्टी, फैमिली, सक्सेस. एटीट्यूड्स आर इवैल्यूएटिव जेमिति कि आपण मानकर एग्जाम रे जो सिलेबस रे भी आपण मानकर अछि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स और व्हाट आर द कंडीशंस, हाउ कैन यू चेंज योर एटीट्यूड्स. ऑपरेंट कंडीशनिंग अछि, आपनकर क्लासिकल कंडीशनिंग अछि. दोज आर द वेज यू कैन चेंज योर एटीट्यूड. परसुएशन अछि आ आपनकर कोन अछि ना सोशल इन्फ्लुएंस. ए जो जिनसर आपण एटीट्यूड चेंज हे परिबो हैला. बट वैल्यू जोटा कि आपनकर बहुत ज्यादा डीप रोटेड एंड until unless you face something very hard experience in your life, your value system will not change. It will be same as the childhood onwards. It will get developed by your families, by your peer group, by your education. It is not going to change at all. Okay, until unless you face some experience. तापर आपनकर attitudes are evaluative. They are favorable or non-favorable feelings towards something, like liking a task or disliking a person. ऑलरेडी कहिछि लाइकिंग करिबा डिसलाइकिंग करिबा दैट इज योर एटीट्यूड. एटा किंतु आपनकर फाउंडेशनल ऑनेस्टी हे गला, फैमिली हे गला, सक्सेस हे गला. तो इंटरसेक्शन इज बिहेवियर. द ओवरलैप shows where your core belief align with your specific feelings, often driving action like choosing a career or lifestyle. बुझ पाइले कि नहीं? तो बिहेवियर केमती आसीबो ना आपनकर वैल्यू भी रहिबो ता सहित आपनकर एटीट्यूड जते डेवलप हेबो फॉर द पॉजिटिव थिंग से भली आपनकर बिहेवियर रे चेंजेस आसीबो. बुझ पाइले कि नहीं समझते हैला? तो जदी आपन देखुचंदी कि बिहेवियर आपन माने जानि चंती ना नहीं. बिहेवियर आपन कोन होबे ना एटीट्यूड सहित एनवायरनमेंट रे भी बहुत ज्यादा अछि कि एनवायरनमेंट सहित आपनकर एटीट्यूड भी आपनकर बिहेवियर केमती हेबो ना. एटीट्यूड तो रहइबो. एटीट्यूड केमती फॉर्मेशन हुए थ्रू द वैल्यू रे आपनकर एटीट्यूड फॉर्मेशन हुए. जेमती म आपन कहली जदी आपनकर वैल्यू थिबो जस्टिस, फॉर एग्जांपल आपनकर वैल्यू अछि जस्टिस, तार कोन हो ना एटीट्यूड माने कोन आपन माने कोन करिवे ना आपन माने सब बेले यू फेवर हला और यू फेवर और यू ऑलवेज stand for transgender people. ओके, ट्रांसजेंडर पीपल आपन स्टैंड हेबे काहे कि ना आपन जस्टिस आपनकर वैल्यू सिस्टम अछि. बट एटीट्यूड सहित जते आपनकर एनवायरनमेंट मिलिबो
एनवायरनमेंट जब आप मिसई देबे सेते बेले आपनकर फॉर्मेशन हम आपनकर बिहेवियर सपोज आपनकर एटीट्यूड टुवर्ड्स हैविंग स्वीट आपन को मिठा खाए को बहुत ज्यादा पसंद बट एटी आपन टेबल ऊपर गोटे मिठा अछि तो आपन आसी कोन खाइदेबेनी बट आपन को फ्रिज रे आपन को घरे गोटे मिठा अछि ताले आपन डायरेक्ट फ्रिज खोलिबे खाइबे बुझबेले तो बिहेवियर केमति हो ना एटीट्यूड सहित आपन एनवायरनमेंट मिलिबो बुझबेले तो जदी इफ यू लाइक समथिंग कैन नॉट डू दैट सपोज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग सिगरेट अछि आपन को स्मोक करे को पसंद लगे बट व्हेन योर टीचर इज अराउंड योर पेरेंट्स इज अराउंड दैट मीन्स दैट क्रिएट एन एनवायरनमेंट देयर यू कैन नॉट स्मोक द बिहेवियर विल चेंज अंडरस्टैंड माय पॉइंट ओके तो एटीट्यूड आउ एनवायरनमेंट रहला पर कि आपनकर बिहेवियर चेंजेस आसीबे आई होप कि आपन मन को सेशन टी भल लागिथिबो जदी आपन माने चाहुचंती कि एमती सेशन आसु आ जो माने चाहुचंती कि वेदांग सिविल सर्विस सहित आपनकर प्रिपरेशन को स्टार्ट करे पई यू कैन यूज द कोड ADZ10 जोतरे कि आपन मेसेज कर देबे व्हाट्सएप नंबर आपन को वेदांग वेबसाइट मिल जिवो तो सेइदरे आपन जदी ए कोड मेसेज करचंती दैट मींस आई विल बी देयर पर्सनली आपन को गाइड करबे आपन केमती पढिबे केमती आपन सिलेबस को कवर करबे केमती आपन टाइम मैनेजमेंट करिवे डिसिप्लिन केमती मैनेज करिवे प्रॉपर टाइम रे केमती आपन कंप्लीट करिवे आपन सिलेबस एंड इट विल बी वेरी ग्रेटफुल जर्नी टुगेदर सो थैंक यू सो मच